so we have question 18 here, which says find the sum of the series tan inverse of 1 divided by x square plus x plus 1 plus tan inverse of 1 divided by x square plus 3x plus 3 so on up till tan inverse of 1 divided by x square plus 2n plus 1 into x plus n square plus n plus 1. काफ़ी लंबी चौड़ी सीरीज है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, for this solution, for this question, okay, I can write tan inverse of 1 upon x square plus x plus 1 as tan inverse 1 upon 1 plus x into x plus 1. Right. Okay, यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लिक कर रही है. Okay, there is a formula tan inverse of A minus tan inverse of B is tan inverse of A minus B upon 1 plus AB. Okay. So, by using this formula, I'll solve this question. Okay. I can write this as tan inverse x plus 1 minus x upon 1 plus x into x plus 1. So, it gets into form of tan inverse of A minus B upon 1 plus AB. Where A is x plus 1 and B is x. Correct. Perfect. Okay, so let me denote this as S. So Okay. I can write S as tan inverse of x plus 1 minus tan inverse x. Similarly, when I expand this, I'll get tan inverse 1 upon 1 plus x square plus 3x plus 2. I can write this as x plus 2 into x plus 1. Right. Correct. So I can write this as tan inverse of x plus 2 minus x plus 1 Okay. upon 1 plus x plus 2 into x plus 1. Which right? is again applying tan inverse of A minus tan inverse of B's formula. Yeah, where Okay. A is tan inverse of x plus 2 minus tan inverse of x plus 1. Okay. Continuing it, similarly अब मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगी. All right. So for this, tan inverse, it can be written as tan inverse 1 upon 1 plus x plus n plus 1 into x plus n. This is the last term, Okay. which can be written as tan inverse of x plus n plus 1 x plus n plus 1 minus tan minus x plus n, right? Right. Upon 1 plus x plus n plus 1 into x plus n. Right. This is again tan inverse of A minus B. Exactly. So A when I is continue x plus this, n plus 1 is equals and B to is x plus n. tan inverse of x plus n plus 1 minus tan inverse of X plus n. x plus n. Right. Okay, so when I see these terms get cancelled. Right. Okay, so my final sum will be tan inverse of x plus n plus 1 minus tan inverse x. Okay. Again I'll apply this formula to find the final sum Exactly. of the series. That will be tan inverse of A minus tan inverse of B would be what? We have already seen the formula. Yeah, it's going to be tan inverse of x plus n plus 1 plus x Minus x, right? Yeah, Tan inverse. tan inverse of, yes, it's tan Right. inverse of A minus tan inverse of B. So it's going to be minus Right. upon 1 plus x plus n plus 1 into x, which Right. will, then we'll get tan inverse of n plus 1 upon 1 plus x into x plus n plus 1, which is the final Simplified answer. sum Okay. of the series. Okay. Alright, so this question was pretty easy. I mean, we had to find the sum of a series, and generally we see that when we have to find the sum of a huge series, if we write it in certain form as a minus b, if you write every term in that form, then from every term
one term will get cancelled. Generally this is the trend and only 2 terms are remaining. यहाँ पे भी हमने यही किया है कि हमने tan inverse of a minus tan inverse of b का फॉर्मूला यूज किया और हर एक टर्म को उस फॉर्म में लिखा है. फिर अल्टीमेटली s में से सिर्फ 2 ही टर्म्स बचते हैं जिसको हमने सिंप्लीफाई करके सम फाइंड किया है सीरीज का. ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18. Alright, so we have question 19 here. If sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to pi, then choose the correct option. और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. Okay, now this question, I've been given these 4 options. अब मुझे इनमें से कोई 2 चूज करने हैं और मे बी एक या मल्टीपल, आई डोंट नो. हाँ. So let me see what is the expression given. I can manipulate it. Sin inverse x plus sin inverse y is equals to pi minus sin inverse z. Okay, let me take sin on both the sides. So I'll get sin of sin inverse x plus sin inverse y is equals to sin of pi minus sin inverse z. Now here I see a formula, sin of a plus b, which is equals to sin a cos b plus cos a sin b, correct? Right. So let me write it. Sin of sin inverse x cos of sin inverse y plus cos of sin inverse x sin of sin inverse y. Now sin of pi minus sin inverse z is what? Sin of sin inverse z. Right. Sin of pi minus theta is equal to sin theta. Okay. Now sin of sin inverse x by property is x, correct? Right. X. Now I can write this sin inverse y as cos inverse of 1 upon under root 1 minus 1. Okay, let me write this way separately. Sin inverse y can be written as cos inverse under root of 1 minus y square, correct? Okay. So I can write this thing as under root of 1 minus y square plus again under root of 1 minus x square. I can write this by 1 into y, which is equals to z. Okay. The one thing which I can see is let me square this thing. Before squaring, we'll take this term here. X under root of 1 minus y square is equals to z minus y under root of 1 minus x square. ये कैसे समझ में आएगा? शायद क्या इसका रीज़न ये है कि अगर हम स्क्वायर करते तो वो अंडर रूट वाली टर्म नहीं जाती है. अगर हम इस साइड लेके जा रहे हैं तो अंडर रूट वाली टर्म इजीली एलिमिनेट होती है. ओके. Okay, when I square it, I'll get x square 1 minus y square is equals to z square plus y square 1 minus x square minus 2yz under root of 1 minus x square. Now let me take these terms this side. So I'll get x square minus y square minus z square is equals to minus of 2yz under root of 1 minus x square, correct? Okay. Because these terms get cancelled, x square y square and x square y square. Okay. Same. हाँ, तो let me square this again. Squaring this equation, I'll get x to the power 4 plus y to the power 4 plus z to the power 4 minus 2x square y square minus 2x square z square plus 2y square z square, correct? अब ये कैसे समझ में आएगा कि स्क्वायर करना है? क्या इसका रीज़न ये है कि क्योंकि मेरे को ऑप्शंस उस फॉर्म में गिवन है. एग्जैक्टली x पावर 4 और y पावर 4 के टर्म्स में है और हमें अभी x स्क्वायर आया है तो उसको स्क्वायर कर दिया हमने. हाँ. ओके. This will give me 4 y square x square z square. Alright. So when I see this term and I see all the options given, I can see what my term will be. Okay. When I see these options, I can see clearly that I can write this as x की power 4 plus y की power 4
plus z to the power 4 plus 4x square y square z square is equals to 2 times x square y square plus y square z square plus z square x square, which is option C, correct? Right. So from this I get option C. Okay. But still, since there's a more than one question given, I think I'll try more. एक बार ऑप्शंस का फॉर्म देखते हैं. हमें ऑलरेडी ऑप्शन सी आ गया है. ओके. तो अब मैं देखती हूँ और भी ऑप्शंस गिवन है, तो लेट मी ट्राई वंस मोर कि मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ. ओके. नाउ आई विल ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि स्क्वायरिंग से मैंने देख लिया आई कांट गेट टू द आंसर. बिकॉज स्क्वायरिंग से हमें x पावर 4 वाले Terms ऑप्शन आ तो रहे आ हैं. गया, बट दो ऑप्शंस है ए और बी जो कि डिफरेंट फॉर्म में दिए हुए हैं उससे. So let me try a different approach. ओके. Let me consider sin inverse x equals to alpha, ओके. sin inverse y is equals to beta, ओके. and sin inverse z is equals to gamma. So I can write this as alpha plus beta plus gamma is equals to pi, correct? राइट. Okay. कि हमें दिया हुआ है ऑलरेडी. Yeah. So let me write this as sine of alpha plus beta is equals to sine of pi minus gamma. Again I've taken this thing towards this and taken sine on the both sides. राइट. Okay. Okay, हमने अभी ये एक्सप्रेशन लिखा sine of alpha plus beta equals to sine of pi minus y. Okay, when I see मेरे को ऑप्शंस दे रखा है इस फॉर्म में x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, मुझे दोनों इस फॉर्म में दे रखे हैं. तो लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन अल्फा. ओके. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा, जो कि Usually हमारा cos alpha. sin स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट हो जाता है, जो कि similarly cos alpha है. sin beta cos beta plus sin gamma cos gamma, correct? राइट. I'll multiply this and divide it by 2, this expression. So this Okay. will give me sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma divided by 2. तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि जब साइन अल्फा कॉस अल्फा प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हमेशा ही ऑलमोस्ट हमेशा ही हम उसको साइन 2 अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. Okay, since मुझे पता है alpha plus beta plus gamma is equals to pi है, there's another important property which is sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, where a plus b plus c equals to pi. This gives us 4 times sin a, sin b, sin c. So when I solve this is the property. By using this property, when I solve this further, I'll get 4 times divided by 2 sin alpha, sin beta, sin gamma. राइट. Okay, what is sin alpha? X, sin beta is y, sin gamma is Yeah, z, take it and as I'll get it substitution. 2. ओके. So when I see this expression comes out to be 2xyz. राइट. According to the options given, when I see, this is the option which comes. So here we solve this question by 2 approaches. One approach is when I take this expression sin inverse x plus sin inverse y is equals to pi minus sin inverse z, and I take sin on the both sides. And another property I consider alpha. Sin alpha is equals to x, sin beta is equals to y, and sin gamma is equals to z. ओके. Okay, and I use this property that alpha plus beta plus gamma is equals to pi. ओके. तो उसके लिए हमारी एक डायरेक्ट इनइक्वालिटी होती है व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. ऑलराइट. सो इस क्वेश्चन में वी सॉ दैट इट वाज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देयर वर 2 डिफरेंट अप्रोचेस एंड क्लियरली ए एंड बी हैड सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस एंड सी एंड डी हैड सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस. तो एक अप्रोच हमने लगाई x पावर 4 के टर्म्स में सब कुछ बॉइल डाउन करने की, और जो कि हमारी स्क्वायरिंग से हो गई. एंड इन अनदर अप्रोच वी मेड सम सब्स्टिट्यूशन सच एज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड सो ऑन. और फिर उसमें हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई. So please make note of the formulae that we are using in the questions.
आपको सारे फॉर्मूले एक बार में याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे।